Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In our last lecture, we learned how to analyze and explain arguments. We saw that arguments are built from premises and conclusions, and analyzing them helps us to think logically and to avoid errors as well. Today, we take this discussion further by exploring complex arguments, passages, and the common problems we face in reasoning. Everyday communication rarely comes in the form of neat and simple arguments. Instead, we encounter lengthy passages, complicated debates, and arguments that contain multiple layers of reasoning. Our challenge as students of logic is to understand and untangle this complexity, to separate claims, find hidden assumptions, and recognize where the reasoning goes wrong. ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी डेली कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर बहुत लेंथी पैसेजेस होती हैं, लंबी डिस्कशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिबेट्स होते हैं और ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ रीजनिंग आ रही होती हैं। और लॉजिक के स्टूडेंट होने के नाते ये हमें चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स पैराडाइम को हम अनटेंगल कर सकें, हम सेपरेट कर सकें क्लेम्स को हिडन assumptions से, और जहाँ पे हमारी रीजनिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती हो। By the end of today's lecture, you will be able to, not only understand what makes an argument complex, but how to decode a complex argument into a simple argument. You will also learn to analyze, like how to analyze arguments that are hidden in long passages. Additionally, you will recognize some common problems in reasoning, and finally, you will be able to apply logical tools to evaluate arguments more effectively. सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट होता है क्या. व्हाट एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट इज. A complex argument is an argument that contains more than one reasoning step. So instead of a single set of premises that are leading directly to a conclusion, complex arguments may include multiple premises that support different sub-conclusions. There are chains of reasoning where one conclusion becomes the premise of another. And there are overlapping arguments in a passage as well. हमने लास्ट क्लास में जो आर्गूमेंट की एक शेप देखी उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक प्रीमाइस 1 था, एक प्रीमाइस 2 था, और ये दोनों प्रीमाइसेस एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे. लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रीमाइसेस होते हैं और डिफरेंट सब कंक्लूशंस होती हैं, और हमारे पास एक चेन्स ऑफ रीजनिंग. और चेन्स ऑफ रीजनिंग से क्या मुराद है कि एक प्रीमाइस या दो प्रीमाइस जब एक कंक्लूजन की तरफ डायरेक्ट कर रही होती हैं, लेके जा रहे होते हैं, तो वही कंक्लूजन किसी और कंक्लूजन के लिए प्रीमाइस का रोल प्ले कर रहा होता है. एंड देयर आर सर्टेन ओवरलैपिंग आर्गूमेंट्स इन अ पैसेज एज वेल. फॉर इंस्टेंस, जो एग्जांपल हमें लास्ट क्लास में ली थी, यहाँ पे हम दोबारा उसकी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे एज अ कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट लेके चलेंगे. वी हैव अ प्रीमाइस दैट फास्ट फूड इज अनहेल्दी. That is premise number 1. We have a second premise as well, that people who eat fast food regularly are more likely to become fat. So sub conclusion will be, therefore eating too much fast food is harmful to health, and the final conclusion can be drawn as that the governments should regulate the fast food advertisement. Why? Because जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, जितनी ज़्यादा फास्ट फूड की एक्सपोजिशन होगी पब्लिक के सामने, लोग उतना ज़्यादा उसे ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा उसे खाएंगे, ट्राई करेंगे, उसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे, उतने ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए उसके डिटर्मिनल इफेक्ट्स सामने आना शुरू होंगे. सो यू सी here we can witness a chain, that is premises are leading to a sub conclusion and a sub conclusion is leading to a final conclusion. Complex arguments basically reflects a real world reasoning. In court cases, academic research, and political debates, conclusions are rarely supported by one reason alone. And understanding their structure basically allows us to evaluate them systematically. In textbooks, newspapers, speeches, arguments are not always presented in a kind of a premised conclusion form. They are buried in longer passages. ये arguments जो होते हैं न्यूज़पेपर्स में, टेक्स्ट बुक्स में या स्पीचेस में इवन, सो ये इतना क्लियर नहीं होता हमारे पास इनके इंडिकेटर्स कि हम बता सकें कि दिस इज़ अ प्रीमाइस, दिस इज़ अ कंक्लूजन. इनफैक्ट जो बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में वर्ड्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये छुपे हुए होते हैं. हमारा काम क्या होता है, व्हाट आवर टास्क एक्चुअली इज़ टू एक्सट्रैक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट दैम.
और इसको सारा कुछ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, और वो 4 स्टेप्स क्या हैं मैं बताता चलूँ. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीड केयरफुली. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ आइडियाज़. Again, you have to identify the conclusion, just like we studied in the last lecture, कि पहले आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह समझना है और उसके बाद आपने सबसे पहले conclusion को identify करना है. You have to ask yourself, what is the main point that the author wants us to accept. Then the third point is to identify the premises. You have to look for supporting statements. आपने conclusion identify कर लिया. The next thing that comes into play is to identify the statements that are basically supporting that very particular conclusion. And the final step is you have to rewrite in a kind of a standard form. You have to organize clearly into premises and conclusion. For example, education should be a priority for any nation. Countries with high literacy rates enjoy stronger economies and more stable societies. Since Pakistan faces challenges in the literacy, the government must increase investment in education. इसका एनालिसिस करते हैं. लेट्स डू एनालिसिस. आवर प्रीमाइस 1 कैन बी क्लासिफाइड एज कंट्रीज विद हाई लिटरेसी रेट्स एंजॉय स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज एंड स्टेबल सोसाइटीज़. ये प्रीमाइस 1 होगा. आवर प्रीमाइस नंबर 2 स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस इन लिटरेसी. Therefore, the conclusion that we can be drawn based on these two premises can be stated as, thus, Pakistan must increase investment in education. ये तरीका, ये मेथड, ये सीक्वेंशियल स्टेप्स क्यों यूजफुल है समझिएगा. वाई? बिकॉज दिस मेथड हेल्प्स अस टू स्ट्रिप अवे unnecessary details and focus only on the logical structure. अब हम देखते हैं कि रीजनिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. You know, even with the strong arguments, reasoning often suffers from problems. Let's look at these, set of some common issues. The very first problem is ambiguity. Words or phrases with multiple meanings confuse reasoning. For example, the chicken is ready to eat. Does this mean that the chicken is cooked or that chicken itself is hungry? यानी अगर ये एग्जाम्पल आई आपके पास जिसके अंदर कहा गया कि द चिकन इज़ रेडी टू ईट, यहाँ क्या मतलब था कि चिकन जो आपने कुक किया अपने घर में, क्या वो खाने के लिए तैयार है? ये चिकन इटसेल्फ भूख है, ये हंग्री, उसे भूख लगी है. सो यू सी, देयर आर हिडन assumptions. Arguments often depend on unstated premises. For instance, he must be a good leader because people voted for him. We have a hidden assumption that people always vote, wisely. हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो होता है, that is of overgeneralization. That is drawing a broad conclusion from a limited amount of data that is available. For instance, I met 2 rude drivers in Karachi, so all drivers in Karachi must be rude. देखें यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर दिया. बेस्ड ऑन द लिमिटेड डाटा दैट वी हैव विद आवर सेल्फ, वी हैव ओवर जनरलाइज द फैक्ट. वी हैव स्टेटेड कि जस्ट बिकॉज कि मेरा 2 लोगों के साथ इनकाउंटर अगर अच्छा नहीं रहा तो शायद पूरे कराची की या पूरे उस पार्टिकुलर विसिनिटी या लोकेलिटी के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो इटसेल्फ अपने बिहेवियर में बिल्कुल वैसे होंगे जिस तरह के वो तो टैक्सी ड्राइवर्स थे. Then we have another kind of a problem, that is the false cause or the post hoc fallacy. Assuming that because one thing follows another, it caused it. For instance, sales increased after we hired a new CEO, therefore he is the reason. देखिए यहाँ पे क्या लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है. ये देखिएगा हमारे यहाँ अक्सर मिथ्स पाई जाती हैं कि अगर if a black cat passes just before you and crosses your path, it is considered to be a sign of bad omen. इससे एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा साइन समझा जाता है कि शायद अब आपके लिए टफ टाइम आगे आने वाला है. दिस इज़ अ फॉल्स कॉज or a post hoc fallacy kind of a problem. Then we have another problem, that is of irrelevant information. Sometimes passages include interesting but kind of an unnecessary detail that distracts the reader from an argument. फिर हमारे पास कुछ इमोशनल अपील्स होती हैं, that is when someone uses emotions instead of logic. For example, you should buy this product because it will make your family proud. देखें यहाँ पे बेचने वाला उस पोटेंशियल ख़रीदार को या उस पोटेंशियल कस्टमर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ख़रीदना चाहिए क्योंकि इसके ख़रीदने के बाद आपकी फैमिली एक सेंस ऑफ प्राइड फील करेगी. इमोशनल अपील की जा रही है. द क्वेश्चन इज़ वाई रिकग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स इन द आर्गूमेंट्स मैटर द मोस्ट. दे डू मैटर. By identifying these issues, what we can do is that we can test whether an argument is strong or flawed.
Logical reasoning is not just about finding conclusions, it is about making sure that those conclusions are built on solid ground. Let's move to another part, and perhaps the final part of our lecture, that is analyzing a complex argument example. एक एग्जाम्पल है हमारे पास पैसेज की सूरत में, दैट क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम. Rising global temperatures lead to extreme weather, events such as floods and droughts. Pakistan, being an agriculture country, depends heavily on stable weather patterns. If the climate change continues unchecked, food security will definitely be threatened. Therefore, the government must invest in renewable energy and developing and launching awareness campaigns. इसका एनालिसिस करते हैं. अगर इसका एनालिसिस करें तो आपको इसके अंदर एक फाइनल कंक्लूजन नज़र आएगा और एक सब कंक्लूजन नज़र आएगा, लेकिन उस सब कंक्लूजन से पहले आपको दो प्रीमाइज स्टेटमेंट्स नज़र आएंगे. फॉर इंस्टेंस, वी मे राइट द वेरी फर्स्ट प्रीमाइज एज rising global temperatures lead to floods. Then we have a second premise as well, that Pakistan depends heavily on stable weather patterns for agriculture. Based on these two premises, we can draw a sub-conclusion that if climate change continues, food security will be threatened. And finally, we have a final conclusion that the government must invest in renewable energy and developing or coming up with awareness campaigns. So you see, here we can witness multiple steps of reasoning that are leading to one policy recommendation. Now let's summarize what we studied in today's lecture. Complex arguments contain multiple steps, sub-conclusions and overlapping reasoning. And passages, what they basically do is that they often hide arguments and our job is to extract and reconstruct them. फिर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हिडन असम्पशंस, ओवर जनरलाइजेशन, फॉल्स क्लेम्स, इररिलेवेंट डिटेल्स एंड इमोशनल अपील्स. हमें इनसे बचना है. और जब कभी हमारा सामना हो, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द लॉजिक इन आवर डेली लाइफ अबाउट complex arguments, we have to analyze them properly. We have to break them into smaller parts to see the big picture. आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.